Good morning, students. How are you all? In before video, we have learned about a story which was said by Bojo and Baheli, that they have said that different types of organisms are living in the world, and different plants are also seen nearby us, and here they have given the organism. Here they have seen that what is organism. So it is a living thing which we can see around us. Now they have seen that a crab and fishes which lives in a sea, and a goat, cow, buffalo, which we can see around us. And here they have given activity number 1, in which you can see that table number 9.1, which you have to fill the water in this habitat and adaptation. We have learned that what is habitat. So what is habitat, students? Do you remember? Okay, the habitat is that the surrounding that provides the necessity to the ऑर्गेनिज्म. जो भी नेसेसिटी है ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके खाने का जो भी चीज है, वो कैसे वेदर उसको चाहिए, वो जो भी नेसेसिटी है टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट. और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो भी इन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर. जो सॉल्टी वाटर होते हैं उसमें भी पे रहते हैं सी plants and animals. वैसे ही many types of animals which live in a cold weather, and many types of animals which live in a hot desert like camel. एंड वैसे हमने यहाँ पे देखा था कि व्हाट इज हैबिटेट, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वी हैव लर्नड. And after what we have learned about aquatic habitat. What are the examples of aquatic habitat we have learned, and abiotic and biotic components. This is the main. What is abiotic component? What is biotic component? So biotic components means all living organism comparisons in are known as a biotic components. The organism like animals and plants which are in a living form are known as a biotic components. और abiotic components वो opposite होता है. जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे सॉइल, एयर एंड वाटर और रॉक्स, जो भी होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ एक्टिविटी 2 में उन्होंने क्या दिया था, एक जर्मिनेटर. वी हैव सीन दिस इन चैप्टर नंबर 1. अ मूग and a moth or a dal which was grown and sprouted, which is known as a germinated seed, and from where the plant rises. वैसे यहाँ पे हमने देखा था जो भी कैसे द एनिमल्स लिव्स इन अ burrow, like a rabbit, snakes. Many snakes also live in a burrow. Rats and many types of different habitats live in the burrow. वैसे ही हमने यहाँ पे देखा था डेजर्ट. तो डेजर्ट में क्या था, द एनबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ डेजर्ट एंड एडेप्टेशंस वर कैमल. जो कैमल होते हैं उनको पानी बहुत लो चाहिए, क्योंकि उनका गर्दन, उनका जो नेक होता है वो बहुत ऊंचा होता है, जिसके कारण जो भी सॉइल में हीट रहेगी वो उनके नेक तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण उसको बहुत तरस लगेगी नहीं. दे कैन नॉट फील थर्स्टी. डेजर्ट में हमने कैमल उसका एग्जाम्पल देखा था. जैसे स्नेक्स एंड मैनी rats, they also live in the burrow. Now they have given here activity number 3, in which loss of a water is given, that how the water is prepared by transpiration, and leaf like structure is there in cactus कैसे वहाँ survive होते हैं. वैसे ही यहाँ पे माउंटेन रीजन में कौन सा एग्जाम्पल था, स्नोफॉल होता है. माउंटेन रीजन में ज़्यादातर स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है.
एंड मोस्टली देर इज मॉइस्चर। मॉइस्चर होता है जिसके कारण वहाँ पे कौन सा एनिमल, ये हमने लेपर्ड दिखा था, और यार्क, जिसके हेयर, बहुत सारे हेयर होते हैं जिसके कारण वो सरवाइव होता है ठंड की वजह से। और उसकी स्किन कैसी थी, बहुत थिक थी, जिसके कारण वो सरवाइव होता था। नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रासलैंड। Now in the grassland, a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. वो कैसे एनिमल को टारगेट बनाता है, डियर जैसे। इट इज अ लाइट ब्राउन इन कलर। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर। अब यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है जिसके कारण आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसा एनिमल क्यों उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वो क्यों अपना प्रे ऐसा ढूंढता है। तो यहाँ पे एनी how the eyes are placed in the face for these two animals। अब उनकी आंखें देखेंगे। अब हम उसकी उन दोनों की आंखें देखेंगे। तो आंखें कहाँ पे है वो आपको देखनी है। आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेसेस। और एनिमल्स के फेस पे, जो भी लायन का फेस है, जो भी लायन का फेस है उनकी उसमें आप देखेंगे तो आइज कहाँ पे होंगी, इन द फ्रंट। एंड द डियर का यहाँ पे आप फेस देखेंगे तो द आइज आर एट side of their faces. Now, lion has long claws in their front leg. They can be withdrawn inside the toe. Do the feature of a lion help it in any way to survive its light brown color? He helps it to hide in the dry grassland. When it hunts for prey, animal to eat, prey yani animal to eat, the eyes in the front of the face allows it to have a correct idea about the location of its prey। अब उनकी आंख जो होती है वो कैसे हेल्प करती है, तो जो भी लोकेशन होता है प्रे का वो आइडेंटिफाई करता है। उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे वो प्रे है, वहां यहाँ पे उनका खाना है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड अ ग्रासलैंड। It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest। अगर आप देखेंगे तो डियर इज अ it is a herbivorous because the deer eats only the grass. He never eats meat. So the deer needs to know about the presence of predator। अब डियर को क्या प्रेजेंस हुआ, को यहाँ पे उनका जो भी उनका शिकार करने को आ रहा है वो उनको पता चल गया। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज अ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट ऑफ द प्रीडेटर। उनके ईयर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिसके कारण जो भी प्रीडेटर होता है वो अगर उनके आजू बाजू में घूमता होगा तो उनको पता चल जाएगा और उनको भागने के लिए भी मदद मिलेगी। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर द डेंजर। उनकी आंखें जो होती है डियर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में है तो उनकी आंखें सभी डायरेक्शन में फर सकती है, जिसके कारण उनको जो भी डेंजर हो, उनको अगर डेंजरस लगेगा तो वो वहां से भाग जाएगी। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर। और डियर जब भी दौड़ती है तो उनकी स्पीड बहुत हाई होती है। देर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन एंड अ डियर एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। यहाँ पे दूसरे भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है जिसके कारण आप जो भी एनिमल्स और वो होता है एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। नाउ सम एक्वेटिक हैबिटेट्स लाइक oceans, we already discussed how fishes are adapted to living in the
सी। अब सी में आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आर फाउंड. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in the water. जो streamlines body होती है वो आसानी से पानी में चलने के लिए हेल्प हो सकती है. अगर आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 8 में आपने बॉडी मूवमेंट्स पढ़ा था तो उसमें लास्ट में क्या आया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द फिश बाय विच दे कैन फ्लो. There are some animals, sea animals like squid and octopus, which do not have these streamlines. They stay deeper in the oceans near the seabed and catches the any prey that moves towards them. अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्ट्रीमलाइंस के बिना जो भी फिशिस ऑक्टोपस होते हैं, स्क्वैड्स होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, तो डीपर इन द सी और ओशन बाय विच दे कैन गेट देयर प्रे. जो भी प्रे होते हैं उसके आजू बाजू में जो भी आएंगे तो वो खा जाएंगे. However, when they move in the water, they make their body shape streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolve in the वाटर. अब फिशिस में भी गिल्स होते हैं जिसके कारण जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो ऑक्सीजन ले सकते हैं. देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव gills. They do not have gills. They breathe in the air through nostrils or blowholes. वो कहाँ से ऑक्सीजन ले पाएंगे, तो nostrils और blowholes. They are located on the upper part of their head. वो कहाँ पे लोकेट होता है, तो upper part of the head. This allows them to breathe in the air when they swim near the surface of the वाटर. सरफेस के वाटर के साइड जो भी सरफेस पे रहते हैं वो आकर जाएंगे जहाँ पे वो ब्रीथ कर सकते हैं. दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. एंड which who are the sea animals which can live for a long time in the ocean or the sea? So what is the answer? So fishes like whale and dolphin which can live for a long time without breathing in the water, because they come on the surface of the water and they breathe and they go again in the water. They come out to the surface from time to time to breathe in the air. Did you ever see this interesting activity of a dolphin in the television program or film on Ocean Sea? If you have not seen, then you can see on the YouTube the videos by which breathing of a dolphin or a whale. You can see that in television Discovery, especially in Discovery, the episodes comes of a fishes where the whale come on the surface and drink take oxygen and go again back in the water. So today we are discussed till here, and we will learn next in the next video. Thank you.